Hello class 7th, this is the video about the third chapter of science, that is heat and temperature. So the terms we need to focus in this chapter are the heat and temperature. The instrument that we use to measure the temperature is thermometer, the various varieties of the thermometers available in the market. Then we will be dealing with the mode of transfer of heat from one place to another. After that, we will talk about the conductors and the insulators. And lastly, in this chapter, we will be focusing the principle of thermos flash. So, without delaying, let's start the today's discussion, students, by a question that what is heat? Students, we know that heat is a form of energy. We cannot see heat. We only just can feel the heat. As you can see, or you must have observed that when you stand under the sun you feel hot. Okay students, ऐसा होता है ना? और when you rub your hands your palm get warm, ऐसा होता है ना? When you hammer a nail you feel the heat there. So we can say that an object which is hot is having more energy than the object that is cold. So hot and cold are the two relative terms, students. सपोज वी आर हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक हीट दे रहा है और एक हीट ले रहा है, तो द ऑब्जेक्ट दैट इज गिविंग आउट द हीट हम उसको बोल देंगे कि कोल्ड है, और द ऑब्जेक्ट दैट इज टेकिंग आउट द और एब्जॉर्बिंग द हीट हम उसको बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. सो दीज आर द हॉट एंड द cold objects. Now students, you must be questioning about ki there must be some unit or some measure to know the degree of heat. So the measure of heat is temperature. Students, as you can see, the temperature measures how hot or cold something is. Actually energy moves between objects that have different temperatures. दो अलग अलग टेम्परेचर पे, कोई हॉट है और कोई कोल्ड है, तो उनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर हमें देखने के लिए मिलता है. हीट इज एनर्जी दैट मूव्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, and temperature indicates the degree of hotness and coldness of an object. Students, the difference in temperatures make energy move back and forth. Now, what is the instrument known as to measure the temperature? The temperature is measured, students, with the help of an instrument you can see here, that is known as the thermometer. और आप सभी जानते होंगे thermometer को. It is the capillary part and lower is the bulb part. The two scales we basically use are the Celsius and the Fahrenheit. The third one is the Kelvin. और वैरायटी ऑफ थर्मामीटर हम यूज करते हैं. वी यूज क्लिनिकल थर्मामीटर्स एंड वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर्स, जो कि हम बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिकल लैब्स में, मेडिकल लैब्स में यूज करते हैं. क्लिनिकल यूज के लिए आपने जो थर्मामीटर देखे, they are basically the digital thermometer and the mercury type thermometer होते हैं. Mercury thermometer, that was the first thermometer invented by Gabriel Fahrenheit in 1714 बेसिकली. और मरकरी जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं, व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस मरकरी थर्मामीटर आर दैट मरकरी इज लस्ट्रस एंड सो इट इज क्लियरली विजिबल. हम अच्छे से हमें दिखता है. इट इज वेरी सेंसिटिव टू द हीट. टेम्परेचर का राइज और फॉल हमें एकदम ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, है ना? तो ये भी चीज होती है. एंड वन मोर थिंग दैट इट इज नॉन स्टिकी टू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. ये स्टिक नहीं करता है. तो these are the advantages. And students, there are some also there are some disadvantages we need to focus कि it is very costly. Students, बहुत costly ये होता है. और one more thing, ये poisonous भी होता है. So we need to handle the mercury thermometer very carefully, students. So keeping in mind the problem related to the mercury thermometers, people generally are using nowadays this digital thermometer. You can see the temperature is shown over here. It is very easy to handle. Even the children can handle it very easily. So it is the digital thermometer that is very much in use nowadays in daily life. Now talking about the flow of heat, students. देखिए आपको यहाँ पे
हैंड्स दिख रहे हैं, आइस इज केप्ट इन द हैंड्स, व्हाट यू फील? आप फील कर सकते हैं कि जब आप आइस को रख रहे हैं, व्हेन यू कीप द आइस क्यूब इन योर पाम, तो आपको कैसा फील होगा? यू फील कोल्ड। क्यों, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, द हीट मूव्स फ्रॉम योर हैंड टू द स्नो एंड स्नो मेल्ट्स। तो आपके जो हाथ है, आपका जो पाम है, वो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? टेम्परेचर वहां से रिलीज हो रहा है, हीट वहां से रिलीज हो रही है, तो इट फील कोल्डर टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स? सो देयर आर वेरियस ट्रांसफर ऑफ हीट मेथड्स दैट वी नीड टू फोकस नाउ। अभी एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। हियर इन द पिक्चर यू कैन सी द यमी सूप इज हियर, है ना? अभी आप देख रहे हैं कि हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द सूप टू द स्पून। अभी ऐसे बाउल रखा है, बाउल में क्या है? गरम गरम सूप रखा है। तो ये क्या हो रहा है? द स्पून दैट इज केप्ट हियर, इट आल्सो फील्स हॉट। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट? तो यही हम अब मेरी बात करने वाले हैं। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर। The first mode of transfer of heat we are looking here is the conduction, and we know students that conduction is the transfer or movement of heat between the two objects that are in contact. तो पहली चीज हमें क्या चाहिए कि एक तो कांटेक्ट होना चाहिए दो बॉडीज के अंदर, है ना? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर इन सॉलिड्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, है ना? तो बिना एक्चुअल पार्टिकल के मूवमेंट के ये हमारे ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है, तो दिस इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन कैन आल्सो अकर विद इन एन ऑब्जेक्ट, हीट मूव फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी टू वार्म योर स्किन। आपको ऐसा लगता है ना? यू कैन फील इट कि हीट मूव्स फ्रॉम इनसाइड योर बॉडी टू वार्म योर स्किन, है ना? योर फीट एंड हैंड्स स्टे वार्म, ऐसा होता है ना, बाय द inflow and outflow of the heat. So these are the things. Now next is the process of convection. Now convection is the process of transfer of heat within a liquid or a gas. Solids में हमने देखा कि basically हम observe करते हैं कि conduction वहाँ पे होता है because the particles remain in the contact. But liquid में और gases में particles are more more apart from each other, farther apart from each other. That's why तो एक जगह से दूसरी जगह जो हीट का ट्रांसफर होता है बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स हमें देखने के लिए मिलता है। एज यू कैन सी द पार्टिकल्स टेक हीट विद देम। हीट तो आपने देखा होगा जरूर कि हीट फ्रॉम अ कैंपफायर वार्म्स द एयर अराउंड इट एंड इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। एक जगह से दूसरी जगह तक पार्टिकल ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये किस में होगा? जहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो जनरली किस में ऑब्जर्व होगा? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। सॉलिड्स में नहीं होगा, सॉलिड्स में होगा कंडक्शन, और लिक्विड और गैसेस में हमें देखने के लिए मिलता है कंडक्शन। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन एग्जांपल हम यहाँ पे एक देख लेते हैं, दैट इज कि हॉट एयर राइजेस अबव द कूलर इन द बैलून, दैट्स दैट इज व्हाट कीप्स हॉट एयर बैलून इनसाइड। ऐसे ही तो होता है ना, फ्लाइट में क्यों रहेगा? क्योंकि जो हॉट एयर है वो क्या, लाइट रहेगी, है ना? एंड इट टेक्स द बैलून अप अप एंड टेक इट टू द, है ना? नाउ हमने देख लिया कि कंडक्शन इन द सॉलिड होगा, कन्वेक्शन किस में होगा? लिक्विड और गैसेस में होगा। एंड द थर्ड transfer mode of heat, that is the radiation. So heat can also move as radiation, and it is the transfer of heat without matter to carry it. Heat leaves one object and goes instantly to the another. When you stand sometimes under the sun you feel hot, तो ऐसा क्यों हो रहा है? It is because of the process of the radiation, है ना? Standing near a campfire you feel the warm air, you also feel the heat through radiation. So ये process क्या हो रहा है? Radiation हो रहा है। It doesn't require the material medium actually, है ना? So you can see a baby is here in the picture standing under the sun. So heat from the sun radiates through space and through the atmosphere before it warms your face, है ना? Similarly, है ना? तो ट्रांसफर ऑफ हीट होगा विदाउट मैटर टू कैरी इट होगा, हीट लीव्स वन ऑब्जेक्ट एंड इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द अदर। सो रेडिएशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वे हीट कैन मूव। तो आपने तीन प्रोसेस यहाँ पे जाने। सबसे पहले हमारे पास क्या था? कंडक्शन, दैट इज किस में रहेगा? वो सॉलिड में रहेगा। कन्वेक्शन इज फॉलोड इन मेनली इन लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें पार्टिकल का मूवमेंट्स हो रहा है, एंड जहाँ पे मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट प्रोसेस इज, है ना? तो बात करते हैं अब मटेरियल जो अलाउ करता है और जो अलाउ नहीं करता है फ्लो ऑफ हीट। तो द मटेरियल दैट अलाउ द हीट टू मूव थ्रू इट इजीली, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। मैनी हीट कंडक्टर्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, है
है ना। तो देखते हैं, here are some examples in the picture. Examples of good conductor and bad conductor. You can see the metallic body is a good conductor of heat. और यहाँ पे ये जो हैंडल है, इट इज द वुडन हैंडल, दैट इज द इंसुलेटर. इंसुलेटर आर द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ द, बात समझ में आ रही है ना. अनदर एग्जांपल इज हियर, मार्बल और स्टोन डज नॉट कंडक्ट हीट एज वेल एज metals do, but it can still conduct heat away from your body. That's why marble feels cool when you touch it. So metals are great heat conductors. Some metal conduct heat better than other do, है ना. सभी मेटल एक तरह से कंडक्ट नहीं करते, सबकी अलग अलग अपनी कंडक्टिव स्ट्रेंथ होती है. कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा. एंड यू कैन सी हियर, जो हम वायर घर पे यूज़ करते हैं, द वायर इज मेड अप ऑफ मेटल दैट इज ऑफ कॉपर, जो कि एक अच्छा कंडक्टर है. एंड द इंसुलेशन जो हम इससे कवर अप कर रहे हैं, प्लास्टिक पॉलीमर जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज इंसुलेशन जो रहता है. बट है ना, तो इसी तरह से, बट ऑल द मटेरियल आर नॉट कंडक्टर्स. ही डज नॉट मूव इजीली थ्रू सम मटेरियल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं. सो द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट वेल आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स. इनका एप्लीकेशंस आप देखते हैं, व्हेन यू यूज ओवन मिट्स, है ना. तो these are the insulators. They are made of material that are poor conductor of heat. When you remove a pan of cookies from the oven, your hands don't get burned, है ना. पता लगा कि वो जल गए हैं, तो इसके लिए आप ओवन मिट्स जो यूज करते हैं, these are made up of insulators से मिलके बनते हैं. So the gases can be good insulators. A thin layer of trapped air is an excellent insulator. In cold weather, layers of clothing trap your body heat near you. आप बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ना, तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक इंसुलेशन बना दिया गया है. द एयर is keeping your body out of the contact of the outer atmosphere. तो उससे ऐसा हो रहा है. तो along with the clothing, the air insulates your body. नाउ लास्टली जब हमें बात करनी है, हमने बात करी कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की, मटेरियल की, हमने ये बात करनी है. लास्टली हम बात कर रहे हैं हेयर. अब हेयर्स भी हमें क्या करते हैं, हेयर इज एन इंसुलेटर. मोस्ट फरी एनिमल्स आपने देखा होगा स्टे वार्म इन कोल्ड वेदर. फर इज मेड ऑफ थिक हेयर्स, है ना. अराउंड ईच हेयर इज एयर. द एयर एंड द फर एक्ट एज एन इंसुलेटर कीपिंग द एनिमल्स वार्म. आप देख सकते हैं ना, फरी जो एनिमल्स होते हैं. So lastly thing what we have to talk in this discussion is the principle of thermos flask. अब thermos flask आप सभी यूज करते हैं. तो थर्मस फ्लास्क जो होता है इज मेनली मेड अप ऑफ प्लग. इसको प्लग बोलते हैं. यू कैन सी हियर द प्लग, और इसको प्लास्टिक स्टॉपर भी बोल सकते हैं. दिस इज द आउटर पार्ट. आउटर पार्ट ये है, बीच में बेवरेजेस आप जो रखते हैं. Vacuum is there, the inner bottle is here, some spring is there. तो inner bottle का जो part है ना, it is mainly made up of shiny silver surface. So the principle of the thermos flask is mainly क्या होता है, हम देखते हैं इसकी वर्किंग, कि the shiny silver surface of the flask prevents the transfer of heat from the outside, बाहर से और अंदर तक का वो जो हीट ट्रांसफर है उसको प्रिवेंट करता है. एंड ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, दोनों तरफ से इसको प्रिवेंट करता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ हीट, है ना. द वैक्यूम बिटवीन द ग्लास walls of flask prevent the transfer of heat by conduction and convection, as both the mode requires a medium to transfer heat, है ना. कंडक्शन आपने पढ़ा था, कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों में आपको क्या मटेरियल मीडियम चाहिए. तो वैक्यूम यहाँ पे जो है, इट कीप्स द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ द हीट, उसको प्रिवेंट करता है ना. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द थर्मस फ्लास्क. So that's all student. This is all we have to talk about in the chapter. I hope you would have liked this video. Keep hard working. Thank you very much.